वेलकम बैक टू द चैनल। ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड टैक्स प्रोसीडिंग्स वाली वीडियोस की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो नंबर 6 है जिसमें हम ड्राफ्टिंग कैसे करनी है हमें टैक्स प्रोसीडिंग्स में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंटेंशन यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम सभी जान लें कि हमें एक अच्छी ड्राफ्टिंग, जो कि फेसलेस रेजीम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ आप चेहरा नहीं देख सकते डिपार्टमेंट का, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ड्राफ्टिंग स्किल्स सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आज हम जो आगे वीडियो में बात करेंगे वो हम सारी के सारे इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ड्राफ्टिंग करते समय। अपने आपको कोई भी नोटिस आया अगर डिपार्टमेंट से, तो उसमें कैसे ड्राफ्टिंग आपको ध्यान रखना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो द फेसलेस असेसमेंट स्कीम स्कोप इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, प्रीवियस वीडियोस भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग इज़ टू राइट डाउन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। डिक्शनरी मीनिंग, ड्राफ्ट का मतलब होता है ड्राफ्ट कि कुछ हमने रफ सा कुछ बनाया है विद एन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रोवाइज लेटर, एंड वी ऑलवेज वांट टू इम्प्रोवाइज इट, हम कहते हैं ड्राफ्ट है, दिस इज़ नॉट द फाइनल वन। बट जब हम टैक्स के पार्लेंस में बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राफ्टिंग ऑफ द सबमिशंस और द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में वट एवर यू प्लेस द रिप्लाई, वो हमारे लिए ड्राफ्टिंग आती है। सो इट इज़ बेसिकली नॉट अ रफ ड्राफ्ट, इट इज़ अ ड्राफ्ट टू बी presented before the department. While preparing any communication, including a communication with respect to income tax assessment and appeal, it is always a good practice to revise your draft. Conversely, at the same time, the limitations of time, cost and other resources may make it difficult. Of course, this is a very important thing क्योंकि drafting takes a lot of amount of time. बहुत टाइम लगता है ड्राफ्ट करने में. You have to be so specific, you have to be so considerate about whatever work you are doing. आप क्या लिख रहे हो, एवरी लाइन, एवरी पॉइंट, एवरी वर्ड मैटर्स। जब आप ड्राफ्ट बनाते हो, जब आप अपनी ड्राफ्टिंग करते हो असेसमेंट्स की और सबमिशंस की, तो हर चीज़ मैटर करती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So care needs to be exercised to ensure that the first draft itself is without mistakes and is correct. It is an irony, it doesn't happen like that. होता नहीं है. आप जब रीड करते हो, कई बार 100 पेजेस के मेरे सबमिशंस बन जाते हैं, एंड व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग आई फील लाइक उसमें और कुछ ऐड करना है, एंड दैट इज़ इट. द मोर यू रीड इट, द मोर यू फील लाइक पुटिंग इन मोर ऑफ योर एफर्ट्स एंड गेटिंग इट डन इन अ मोर स्पेसिफिक एंड अ बेटर वे. पर ठीक है, कहीं तो वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. आई नो समटाइम्स आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद ही कहती हूँ अपने आप से, बस दिस इज़ इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So as far as we are concerned, while we write anything on drafting, essentially we will be discussing now how to communicate. That is important. ये पूरी जो सीरीज हम बात कर रहे हैं, it is all about how to communicate in writing in the best possible way so that you express what you really want to show to the department, what you really want to prove them. So the faceless, I'm taking you to a quick brush up. The faceless assessment scheme as it stands today was notified by notification numbers 61/2019 and 62/2019 dated 12 September. These dates are important to know, and was modified by notification numbers. This was subsequent modifications which were being done on 13th August 2020. The faceless assessment scheme covers all scrutiny assessments under section 143(3), 144 and 148. When the assessment is done under section 148, presently 148, that means the reassessment proceedings, presently the jurisdictional assessing officer issues the notice, provides reasons and deals with the objection, and thereafter the assessment is carried out under the faceless scheme. So assessments, there are still some assessments which are not under the faceless scheme. Assessments involving international taxation, Black Money Act, Benami Property Act, and assessments by central charges, which normally deal with cases involving search and seizures. They are still pending, and they are done, they are still done in the physical mode. Notwithstanding the above, the National Faceless Assessment Center may at any stage of the assessment, if considered necessary, transfer the case to the jurisdictional assessing officer with the prior approval of the CBDT. बहुत बार ऐसा केस देखा गया है, the cases flow from the taxation local jurisdictional officer से आपके पास एक लेटर आएगा, उसके बाद वो
फेसलेस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कई बार फेसलेस वाले उसको कुछ 2-3 नोटिस भेजेंगे, वो फिर से जुरिसडिक्शनल लॉसिंग ऑफिसर के पास हो जाएगा। सो अभी ये केओस है। This should not be there, but practically speaking, this still exists. Jurisdictional officer के पास से notice आएगा, then you have the faceless people coming in, then you again have the jurisdictional assessing officer playing the role, and then again, maybe like it ends up, the order comes up from the faceless center. So we are still dealing with all this stuff, but in the meantime, we are focusing on the drafting part. So following are the provisions which will require the screen which you are seeing, the slide which I'm showing you right now, is the provisions which will require communication by the SSC during the course of faceless assessment. So faceless का जब भी notice आता है, तो ये सारे sections you have to abide. So 144B1 Roman letter 2 response to notice received under section 143(2). This has to be filed within, सबसे पहले 143(2) का ही notice आता है आपके पास, और within 15 days आपको notice का reply देना होता है. This is a very standard time which they give to you. If you want an extension to that, you just have to file an adjournment application. Maybe like if you're not in the town for those particular days and you won't be able to do that, then you need to definitely reply. I always emphasize on replying. रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर अनेबल टू डू, इफ़ यू आर अनेबल टू फाइल द रिप्लाई विद इन द टाइम, अप्लाई फॉर अ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. टेक सम टाइम. Take some time from the department so that you are complying with the notices. The department is very generous enough to give you time. So 144B1 Roman letter 7. Response to request received under section 144B 1 clause 1 Roman letter 6. This is usually to seek further information, documents, or evidence. The response has to be filed within the time specified in the notice received, or if extension is sought before time specified in such extension. The SSC may request for an extension of time. This is what I said, and if granted, the response may be filed within the extended time. The extended time is generally granted unless it is a time barring case. So then we have section 144B1 and Roman letter 12. Response to show cause notice received under section 144B1 Roman letter 11. The show cause notice arises out of non-compliance with any notices issued with any direction. So these are the sections, and extended time, आपको इन सारे जो notices जितने भी आते हैं आपको faceless में, you have to place a reply to them, and a very appropriate reply. Then you have section 144B1(22), where any variation prejudicial to the interest of the SSC is proposed, the NFAC shall provide an opportunity to the SSC by issuing a show cause notice under section 144B1. The clauses, the response has to be filed within the specified or extended time as the case may be. Response filing is very important in all these sections. You have to be very careful. So then we have the in case of non-resident assessees and in case of assessees where the transfer pricing officer TPO has been involved and he has passed an order under section 92AC3 proposing an adjustment, there is an additional response involved. This is in response to draft assessment order or revised draft assessment order, and यहाँ पे there is one more person, one more body which gets into place is the dispute resolution panel, DRP, which is under section 144C. So इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है पहले, एंड मे बी लाइक हमने मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 144C का एक ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, एंड वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द DRP इज़ अ मिडिल बॉडी, यू डोंट हैव टू गो टू द CIT अपील, यू कैन गो डायरेक्टली टू द DRP, एंड वहाँ पे बस एक एडवांटेज ये होता है कि यू are sure to get a reply, you sure to get a judgment within 9 months. CIT में जाते तो within 9 months मिलता नहीं है, but as far as when the non-resident assessee is concerned, मैंने उस अपने वीडियो में बताया था कि जब when a non-resident is involved in 144C में जब कोई केस आता है हियरिंग के लिए, then CIT appeal is very fast, and yes, I have received the order of that particular assessee. जब वो वीडियो बनाया था उसके बाद वो ऑर्डर भी आ गया, and it happened very quick. नॉर्मली रेजिडेंशियल एसेसीज के लिए ये सारे इतने क्विक ऑर्डर्स आते नहीं हैं, बट मे बी लाइक इन फ्यूचर टाइम आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो ऑल्सो, एंड माई केस वॉज वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया. द ड्राफ्टिंग वॉज सो गुड दैट आई कुड गेट दी असेसमेंट ऑन निल बेसिस.
So there was no addition. Whatever the AO had done the adjustments or they had made the additions, those were nullified only just by giving the written submissions. So written submissions play a very important role. Well, a proper advice also plays a very important role. कैसे? Because उस particular case में हमने advise किया था कि we are not going to the DRP. We will be going to the CIT appeal only. उसमें मैंने explain किया है कि हमने ये वाला route क्यों choose किया, and you can see that on my channel. The video is still available. So tips and techniques for effective writing, we are discussing that. This is important, very important. In all the communications above, the whatever above in means the all these sections which we have referred in the previous slides, let me take you to them again. So here all these sections which we are talking about, here whenever you're making any communication, the most important points that you need to remember is the grammatical accuracy. You have to be what do you say when you form a sentence? अगर आप टूटा फूटा सेंटेंस बोलते हो तो nobody is interested in listening. वैसे ही अगर आप टूटा फूटा लिखते हो, I mean उसमें धुन लय कुछ नहीं है तो it doesn't sound well. तो grammatical accuracy is a must. You have to be very particular about this. Then factual accuracy. Additionally, one has to ensure that the information that you're submitting, that is actually present. And if it is not present in the public domain and you are differing from what you're putting in the submissions, then you need to give a proof of it. So consistency, first person is used. Yes, अगर हमने शुरू में assessee word use किया है तो आप पूरे थ्रू आउट द सबमिशन assessee word यूज़ करोगे. अगर आपने वर्ड appellant यूज़ किया है तो आप पूरे सबमिशन में appellant यूज़ करोगे. अगर आपने फर्स्ट पर्सन यूज़ किया है देन पूरे सबमिशन में फर्स्ट पर्सन यूज़ करोगे. This consistency you need to maintain, otherwise it is going to get a total amount of confusion. अगर आपने 2 बार में सबमिशंस दिए हैं, रिटर्न सबमिशंस दिए हैं, एडिशनल सबमिशंस दिए, अडेंडम दिए हुआ है, then everywhere you have to be sure that whatever reference you are making to the particular assessee or to any person, then you have to be very very sure कि in every all those submissions you are making the use of that same word. Be very clear on this aspect. Simplicity. You have to make it simple. Complicated कोई भी चीज़ को बनाने का मतलब है you are giving the department various options open to interpret. तो हमें इसको सिंपल रखना है. हम जो कहना चाहते हैं हमें उसे कहना है. एप्पल को एप्पल ही कहना है. एप्पल को घुमा फिरा के दैट मीन्स दिस इज एन एप्पल ऐसे नहीं कहना है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर. However, where the subject matter itself is technical or complicated, simplicity requirement may have to be sacrificed or compromised. This goes purely on the judgment. So you have to be very judgmental also at some times, and maybe this is the requirement of the submission and then you can go with it. So this is 4 points I have discussed. Brevity, it has to be very clear. Shanshipt mein hona chahiye. It has to be, to the point. So further, as far as possible, one should use gender neutral addresses. Yes, you should avoid slangs. Yeah, मैंने कुछ submissions देखे हैं जिसमें I've seen others, I've read many. बहुत बार मेरे पास proof reading के लिए भी आते हैं submissions that you just have to read it. So I many times find कि आपको बहुत harsh नहीं होना है. See, finally the person who is reading it, you have to bring him to comfort. And he has to read the submissions in a very neutral and in a very understandable manner. So your words and everything should not be that aggressive. कोई भी आप aggressive और ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करो जिससे वो जब पढ़ेगा तो उसका दिमाग ख़राब हो जाए. I mean, you have to take bring the person who is reading it to a specified comfort level. So you should avoid slangs. That is very important. For future use, the submissions as well as the annexures should be properly numbered and arranged. Yes, to avoid confusion, if the enclosures are numbered serially from 1 to say 10 in the first submission, then the numbering in the second submission should start from 11. Correct. So that you can, follow a link. Yes. The page numbers, they go in flow. Whenever the items to be dealt with in the submissions are large in numbers, it is better to use a table, index of table. Correct. So internal evidence in the form of bills, receipts, confirmation statements, documents, etc. ये contents में आपको डालना है. Other evidences public domain में जो भी है 26 AS लगा रहे हैं हम या किसी और का certificate लगा रहे हैं. So
you have to put that also. In case both A and B above, the source on basis of claim should be disclosed or at least preserved for future use. Correct. Excerpts from law, including circulars and notifications. Yes. केस लॉज के बारे में, केस लॉज यू नो दे आर दी हार्ट ऑफ एनी सबमिशन. इस पर मैं एक पूरा का पूरा अलग सेशन लूँगी. आई मीन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन केस लॉज, बिकॉज हम केस लॉज कोट तो कर देते हैं, कई बार वो केस लॉज ऐसे हम कोट कर देते हैं. आई हैव सीन मैनी ऑफ देम जिसमें यू नो देयर इज़ एन दोज केसेस हैव बीन ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. यू थिंक कि CIT अपील वो सॉरी ITAT लेवल पे एंड हाई कोर्ट लेवल पे इट वॉज इन फेवर, बट देन द SC हैज़ टर्न्ड इट आउट not to be in your favor. कई बार unfavorable cases में भी कुछ points ऐसे होते हैं that they can be used for your benefit, but then you have to differentiate that case even though it is against you, but there are some points which the judges agree and that you can make use of it. So when you're drafting and when you're putting in any case law, you have to be very specific. You have to read the entire case law thoroughly, and only then you have to quote it in your submission. And सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लूँगी, बिकॉज एक ही स्लाइड में उसके बारे में बोलना वुड बी यू नो डूइंग इनजस्टिस टू द सब्जेक्ट. सो सिमिलरली फेसलेस अपील स्कीम वॉज नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन नंबर. दिस इज़ अपील्स. अभी तक हम असेसमेंट्स की बात कर रहे थे, अभी हम अपील्स की बात कर रहे हैं. अपील्स भी अब सारी फेसलेस सबमिट होती हैं. ITAT की अपील डेफिनेटली. वी आर टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट appellate अथॉरिटी, डैट मीन्स दी CIT, कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील में जब हम यानी कि जब असेसिंग ऑफिसर वाला ऑर्डर आता है हमारे पास, असेसमेंट ऑर्डर आता है, तो उसके लिए हमें अगर अपील करनी है देन वी हैव टू गो टू द फर्स्ट appellate अथॉरिटी, दैट इज़ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स. एंड जब आप उसके पास अपील करने उनके पास आप अपील करने जाओगे देन इट इज़ ऑल इन द फेसलेस मोड. सारी की सारी अपील्स अब फर्स्ट appellate अथॉरिटी पे जितनी भी अपील्स फाइल होती हैं, वी फाइल इट ऑनलाइन ओनली यूजिंग द assessee's लॉगिन. वहाँ पे हम ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, चालान की कॉपी, डिमांड नोटिस की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, कंप्यूटेशन, वी पुट इन ऑल ऑफ दिस ऑन दी एज अ सपोर्टिंग विद द अपील. फॉर्म नंबर 35 वी फाइल विच इज़ फाइल्ड ऑनलाइन ओनली एंड दीज आर ऑल दी अटैचमेंट्स टू इट. सो इसका भी एक अलग से सेपरेट वी कैन मेक अ वीडियो. आई मीन आई विल बी डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसमें मैं पूरे इस वाले टॉपिक को कवर करूँ. फेसलेस अपील्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी अ टाइम्स आप इतने सारे गलत कॉलम्स भर देते हो. इतनी सारी अपील्स जो मेरे पास आती हैं सबमिशंस के लिए, उसमें ग्राउंड्स इतने आई मीन आई कांट टेल यू. ग्राउंड्स आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि जब आपके ग्राउंड्स और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देखे जाएं देन द केस टॉक्स अबाउट इट्स ओन सेल्फ. पर जब मैं देखती हूँ देर आर सो मैनी अपील्स विच आर बीन फाइल्ड, आई डोंट नो हु फाइल्स इट, द क्लाइंट डज इट हिमसेल्फ, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ भी नहीं होता है ग्राउंड में. व्हाट इज़ टू बी एक्सप्लेन? यू हैव टू गो बैक, रीड एवरीथिंग. असेसमेंट ऑफिसर के साथ क्या हुआ, उसने क्या किया. आई मीन इट्स सो मच ऑफ व्हाई थिंग्स हैव बीन टेकन सो लाइटली. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड this particular thing. Form number 35, that is the appeal before the first appellate authority, which consists of grounds of appeal, statement of facts. It has to be very specific. This is the most important document which you will be taking it forward till your Supreme Court level. ये वाला जो फॉर्म नंबर 35 है, ये हमेशा आप हर जगह कोट करोगे. आगे भी जब आप जस्टिस के लिए आगे जाओगे, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी पे जाओगे, तभी आपको ये पूरा का पूरा सेट एज इट इज़ देना होगा. सो आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एज टू व्हाट ग्राउंड यू आर रेजिंग एंड व्हाट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स यू आर पुटिंग इन. एंड इट शुड बी इनकम्प्लीट, आई मीन फुल कंप्लीट. आई मीन कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू मिस्ड आउट अ पॉइंट. सो make sure that you're very careful when you're drafting your appeal. And if appeal is not filed within the statutory time limit, then it has to be properly explained. I have seen cases wherein एक दिन के delay में भी the appeal has got dismissed and it has not been accepted. So you have to be very cautious. So if the appellant has not made any payment of tax, yes, अगर आपको अपील फाइल करनी है तो 20% ऑफ द डिमांड आपको जमा करना होता है. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. ये पूरा एक नया सेशन ही है जिसके बारे में हम बात करेंगे. एडिशनल ग्राउंड्स में बी फाइल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील.
along with reasons for omissions. देखो ये बहुत सारे आगे कॉम्प्लिकेशंस ही होते हैं. अगर आपने एडिशनल ग्राउंड्स भी आपको रेज करने हैं, बाद में आपको याद आता है कि एडिशनल ग्राउंड्स रेज करने हैं, तो आपको बाद में उसे एक अलग से प्रॉपर चैनल के थ्रू, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको ड्राफ्ट करके उसको भेजना होता है. इसलिए वाई एट फर्स्ट इंस्टेंस ओनली आई ऑलवेज एडवाइस कि आप पहली बार में ही बहुत अच्छे से प्रॉपरली केस को स्टडी करके 30 दिन का टाइम मिलता है. 30 days I think is more than enough for anyone to have the appeal filed in a very very proper and a good manner. So if the appellant is filing any evidence, अगर कोई evidence miss हो गया, rule number 46 comes into play. Rule number 46A, it has got its own limitations. So हम उसके बारे में भी बात करेंगे. Yes, we are going to have this very interesting session. And the CIT appeal may, during the pendency of appeal, propose an enhancement. The appellant shall have to show cause as to why the enhancement should not be done in his case. Enhancement के chances हैं, बहुत rare होते हैं, but of course chances are still there. Except the above points which are specific to appeals, the discussion in the case of apply to faceless appeals also. Yes, faceless appeals में भी यही होता है. हम CIT appeal written submissions बनाते हैं and we upload it. We definitely ask for a hearing on the video conference, which as per अभी तक के experience में it's not so fruitful, but definitely you need to make it a point that you have the right to, there is a right to yourself of being heard and you should make use of that right. And ये जो submissions है, written submissions, reply to notices, मैंने इसको बहुत simple बनाया है. I have put